So the new year has just started, 2024. आपके क्या इसमें बड़े goals हैं? My anxiety at some point did not let me make the best of my life. It used to come in the way of the good things that were happening also. So forget planning bigger things. And I have no embarrassment in admitting that I was seeing a therapist for a long time because I needed some guidance and help and support professionally to understand what was triggering my anxiety. So much power in being vulnerable as well. My support system at home was very good, but they were not properly equipped to deal with my emotions. Anoushey, what made you anxious? Sometimes I used to throw up before going up on stage. We have our own coping mechanisms, right? Yeah. Did you ever have, a moment of self-doubt? आपकी आवाज़ इतनी भारी है और इतनी गंदी है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई. Your biggest strength can be thrown at your face. You're too independent, you make too much money, you're on television, it's not a good thing. Speak too much for your own good. What are you wearing? ये कोई time है shoot पे जाने का? Oh, you're going to Islamabad for the weekend. I've heard it all. Your own success makes you, your own independence makes you insecure. How did you deal with that? So I had to filter a lot of people out of my life. Hello and welcome to another one of our candid conversations. And मैं कल बैठे दोबारा सोच रही थी कि क्या मैं ये podcast सिर्फ इसलिए कर रही हूँ because most of the people I know are doing their own podcasts and conversations. But if I really be honest with you, this is a very selfish endeavor. This is a series of conversations that I have been wishing I had time for. क्योंकि हम पिछले 2-3 सालों में इतने मसरूफ़ रहे हैं, काम के लिए चीज़ें करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं ना, सही कहते हैं एडल्ट लाइफ में, all you do is you keep making plans and those plans never materialize. लेकिन आज जो मेरी मेहमान है, she's definitely a better friend than me because she makes sure कि plans बने, plans execute हों, बेशक वो हो ना हो, वो plan execute हो जाए. And there are more than a dozen reasons to love her. As, if even for people who don't have her as a friend, which I think is rather unlucky for you, lekin she is one of the friendliest celebrities we have. She started in the business of content creating jab shayad hum is love se bhi na waqif the. She's been an influencer for young people jab influencers vogue mein nahi the. और इसकी वजह ये है कि she is of course one of the pioneering VJs in Pakistan. I don't know how she feels about that title, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं तो हमने कहा चलो introduction में ये बात भी कर दें. लेकिन a lot of people who've been VJs have moved into acting and doing other things. She is pure, कहते हैं pure girl, still doing VJing and a lot of other interesting things. She's an avid traveler, she's an avid reader, and there is so much to her. Let's discover and let's speak to the wonderful Anoushay Ashraf. Hi, Anoushay. Wow. Assalamualaikum. Thank you for that intro. That was so nice. I think that's the best intro ever. I'm going to record it and save it. And कभी लोग मुझसे पूछेंगे ना अपना introduction दें तो I'll be like ये audio clip सुने और फिर मुझे invite करेंगे. ये आप कहीं पे भी भेज सकती हैं ये clip. Thank you. No, but seriously, I mean every word of it. I think आप बेहतर इंसान हैं और बेहतर दोस्त हैं क्योंकि आप कोशिश करती हैं कि आप इतने सारे लोगों को जानती हैं उन सबको साथ लेकर चलें. How do you do that? Yeah, I like it. I've realized that I like getting people together. Mm-hmm. It's become like my thing. And a couple of my other friends told me, we've met interesting people through you. And you always have these little, okay, chalo hum big book club karte hain. Let's all go and see a movie together. Or, let's all go and sign up for an art class together. Like 3-4 random logon ko bula liya, I don't know. It became like a thing. मुझे खुद भी शौक था नए-नए लोगों से मिलने का. And that's how I've kind of discovered some really amazing people. तो मैं पता है जब मैं ये प्लान कर रही थी ना कॉन्वर्जेशन थोड़ी बहुत तो प्लानिंग लगती है तो मैं सोची थी कि अगर अनुषे की लाइफ पे कोई किताब हो या कोई मूवी हो तो उसका टाइटल क्या होगा एंड आई समहाउ फील इट विल बी द मिलियन लाइव्स एंड पैशंस ऑफ अनुशे अशरफ. Because seriously, you pack so much life into your hours. It's actually commendable. You make time to read, you make time to travel, you make time to work and meet friends. How do you do it, Anoushay? ये multitasking का तुमने कौन सा elixir पिया हुआ है? Yeah, पता है actually I don't. I just do everything in moderation. तो सब कुछ लगता है सबको सब कुछ हो रहा है पर होता है. हाँ. Like, but I hang out with my fans once or twice a week. I work 5 days a week. सही. And then I read like every day for half an hour. Okay. तो हो गया. सब कुछ मिलके. Family भी उसमें कुत्ते भी आ जाते हैं, बिल्लियाँ भी आ जाती हैं. So the new year has just started, 2024.
आपके क्या इसमें बड़े गोल्स हैं? वैसे तो आप यू डू एक्साइटिंग थिंग्स एवरी ईयर, बट इज देयर वन बिग ड्रीम दैट यू आर चेजिंग? Yeah, I'm going to get coffee with Sidra for sure. One plan will be executed. हाँ, क्योंकि ये साल नहीं ख़त्म होना चाहिए विदाउट दैट, है ना? बिकॉज वो नहीं हो पाता. चाय तो मैंने पी लिया है आके, लेकिन अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी. यार प्लान्स, मैंने वो लॉन्ग टर्म प्लान्स तो बिल्कुल छोड़ दिए. Okay. Sure, I want to get a few things done. I want to see a couple of new countries this year, हमेशा की तरह. I want to explore a couple of new places. But जो मैंने करना है ना, वो है कि every day should be a decent day emotionally. कुछ stability होनी चाहिए मेरे emotions में, contentment. So there's no long-term, say, goals. But it's definitely a self-improvement kind of plan for the year 2024. कि अपने आप को थोड़ा सा calm, stable, in a state of gratefulness, shukr, that it is what it is, and I am okay. And because my anxiety at some point did not let me make the best of my life. It used to come in the way of the good things that were happening also. So forget planning bigger things. So I want to be able to enjoy every good thing. My parents, the animals, my time with friends. But I just want to be able to do it well. Can you So connect there's no back? goal. You बिल्कुल सही कहा. बल्कि कल परसों when I had a share on LinkedIn and I had this one poster go up saying you are not your anxious thoughts, and my sister had a big meltdown. She's like, people see you as somebody जो हमेशा composed है. Why do you even want to share कि you are also having anxious thoughts? But I think there's so much power in being vulnerable as well, to show people कि यार we're human. We get fearful thoughts as well. But can you look back and connect, Anoushay, के what made you anxious? And जब तुम recall कर सकती हो, was it work pressure? Was it life pressure? So I spoke to my therapist. And I have no embarrassment in admitting that I was seeing a therapist for a long time because I needed some guidance and help and support professionally to understand what was triggering my anxiety. So my support system at home was very good, but they were not properly equipped to deal with my emotions or to help me streamline them a little bit. So usse what I found out or what I figured out was that I think my anxiety began in childhood, actually, with schooling and with, pressures at home maybe, or with my environment. So I was very anxious through my O-levels, my A-levels, my exams. I was very conscious. I was a little underconfident as a child also. Okay. And I used to get nervous very easily. And today I'm a TV presenter and a radio show presenter, a host. But एक ज़माने में मुझे public speaking से मेरा मतलब अगर मुझे कुछ स्कूल में भी debate करना पड़ता था तो मेरा पेट 4 दिन के लिए ख़राब होता था before the debate. And there was sometimes I used to throw up before going up on stage because I was like, I can't do it. मुझे इतनी stage fright हो रही है कि मैं लोगों के आगे आ रही हूँ. And look at where I have ended up really. But so I think it began very early, and there was no specific trigger that I've been able to pinpoint, but put under any sort of pressure situations was definitely one of those things. Like exams, I was a great student through the course of the year, but exams ke baad, I wasn't as good. Like my teachers would expect she is the front runner in the class, but I was an average. I was an A student, but I would get B's also. I wasn't failing anything. But वो जो expectation होती है ना, this is like a Fulbright scholar. I would not be able to perform because the pressure of performing कि result तो लाना है. तो वो मुझे आज भी होता है, like when I'm playing badminton or tennis and my instructors are like, oh, you're very good. And I'm like, हाँ, but the minute I would have my parents come and watch, मेरी serve खराब हो जाती थी. Because I don't know, मुझे pressure. अच्छा, I was the exact opposite. I can imagine. मुझे ऐसा लगता था कि मैं pressure में the feedback I used to get was कि my teachers or my friends would say कि Sidra, the moment the pressure switch is turned on, you're a different person. So some people do very good under pressure. Yeah. Exactly. लेकिन मुझे लगता है in hindsight, we have our own coping mechanisms, right? Yes. So how did TV happen when you were a shy child, a sensitive child, जिसको anxiety होती थी public attention से? How did TV happen? So TV happened. I went into the television network as an intern. Okay. To do some research for the news channel because I wanted to do journalism and this and that.
So television happened like, I don't know if you remember Ghazanfar Ali, everybody does. We all do. I mean, Indus TV, right? Indus TV. So I was doing research work. I was never in front of the camera. He was the one who got hold of me and said, listen, we've launched a music channel and you should audition for it. So I was like, no, I don't know. He's like, अच्छा try तो करो, देख तो लो, अच्छा मेकअप कराओ. तो मेकअप कराया, मैं ऐसी काम के कपड़ों में थी और उन्होंने मुझे एक कैमरे के आगे बिठा दिया and I was holding a paper and he's like, just read like, and I used to watch a lot of Channel V and MTV because that was so cool, you know. हम वो generation है ना कि MTV and Channel V. Yeah, just like so much Europe in me and America in me. So मैं you know that stopped being cool 10 years ago because Channel V आजकल की Gen Z को नहीं पता कि Channel V क्या है. VJ Tree होता था, he was my favorite. तो I knew कि वो करते क्या हैं और किस तरीके से करते हैं. So I sat there and I was like reading and I remember my hands shaking. So after I was done with my audition, he was like, you're okay, you'll become okay. I was like, no, I won't become okay. मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था. He was like, no, you'll become okay. You'll become okay. So I started in a studio, like a little room with one cameraman and me. And a closed room. So I still felt like I was alone. So I'm comfortable with the camera. I wasn't comfortable with people. Is that the Shafi Court place? Shafi Court. Shafi Court एक ऐसी जगह है जो आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान मीडिया की यूनिवर्सिटी है. बहुत सारे लोग निकले वहाँ से. वो थी यूनिवर्सिटी मेरे लिए because I was 18 years old. And you know, it literally was a university because I learned editing there, I learned lighting there, I learned camera there, I learned dressing there, कैसे बैठना है, अपने हाथों को कैसे रखना है, वो सब. It was like a learning. आज मैं सोचती हूँ कि मुझे वहाँ से डिग्री मिलनी चाहिए थी. मैं 7 साल की है, मैं अपना डबल मास्टर्स निकली हूँ इंडस विजन से. आपने लेकिन अब आपने लेट एडमिशन लिया है टिकटॉक यूनिवर्सिटी में ना. वो भी बहुत कुछ सिखा रही है आजकल लोगों को. क्योंकि एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए. तो अगर मेरी उम्र पे भी अगर आपको टिकटॉक ज्वाइन करना है, कुछ सीखना है तो करें. क्योंकि मैंने किया है और मैंने टिकटॉक वालों को खुद कहा था कि मेरी उम्र शायद निकल चुकी है. तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा वॉच टिकटॉकर्स हैं, फिर उन्होंने मुझे कुछ डॉक्टर्स के अकाउंट्स दिए. अच्छा, हम सिर्फ वो डांस चैलेंजेस देखते हैं तो हमें लगता है कि यही हो रहा है और वो मेरा शौक है एक साइड पे. लाइक डांसिंग इज समथिंग आई लव डूइंग. सो आई started. Make notes for people who are having their weddings in this coming year. आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके दोस्त होना ज़रूरी है. हाँ, दोस्त होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि बस कहीं भी नाच लिया. पाकिस्तान नहीं है. अच्छा. Let me take you back. जब you were only 18, you started out. So in your early 20s, you were recognized from Karachi to Khyber and beyond, perhaps. How did that make you feel? Very conscious. Really? Like, I remember my first autograph. Somebody was like, autograph मिलेगा, and I looked at it and I was like, मुझे कह रही like मुझसे autograph चाहिए, क्योंकि at the end of the day I was still doing a show in that little room with the camera. I didn't know कि how many people are watching until letters started coming. अच्छा, उस ज़माने में emails का इतना वो नहीं था. तो I think I must have been one of the last generations जिनको लोग hand written letters भेजते थे, drawing करके, stickers डाल के, you know, like आतिफ असलम की शक्ल पेंट करके, लाइक अली ज़फ़र के पोस्टर्स खुद हाथों से बना के इनको पहुंचा दे. I think the early 2000s लेटर्स खोलते थे लोग. लेकिन उस वक्त हमारा पॉप म्यूजिक बिकॉज ऑफ इंडस, बिकॉज ऑफ द अदर म्यूजिक चैनल्स, बड़ा ज़बरदस्त उसका गोल्डन पीरियड था उस वक्त. बहुत. और उस वेव में क्योंकि आपके अली ज़फ़र, आतिफ असलम, फ्यूजन्स, नूरीज, वो सब निकल रहे थे और मैं डीनो वगैरह, हम उनको आप तक लेकर आते थे. तो वी वर राइडिंग दैट वेव ऑफ सक्सेस विद देम. हमारी दोस्ती भी इन लोगों से हो गई. हम उनके कॉन्सर्ट्स पे भी जा रहे थे, होस्ट भी कर रहे थे. वो हमारे फ्रेंड्स बन गए. एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ऑल ऑफ अ सडन माय लाइफ हैज बीन promoted, sorted. Like I've become really cool. I don't need to go back to school anymore. But yeah, it happened very quickly, and it happened very, very in a very fun manner. It was nice though. I really miss those times, and I did you ever have a moment of self doubt during that time? जब एक तो वो होगा ना, उसका peak होगा. Was the wave ebbing at any point जब आपको लगे कि oh my god, I don't know now what to do? When you're that age and you become successful, you're equipped to have fun. You're not equipped to deal with any kind of trolling. I don't understand how kids do it now. Because I really, मुझे मतलब कि सलाम है उन पे, क्योंकि लोग क्या क्या लिखते हैं अब. उस वक्त तो हमारे पास इतना एक्सेस नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, तो मुझे कोई गालियाँ नहीं पड़ती थी. शुक्र है कोई ये नहीं कहता था आपके कपड़े बहुत हिडियस हैं, why did you wake up and step out today? मर रही है कहीं अमेरिका जाने के लिए और काम के लिए, और कपड़े देख लो, ये कर लो, वो कर लो, मुसलमान है नहीं है, लेकिन ना रोज़ आपको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है अब. लेकिन उस ज़माने में मुझे याद है मेरे शो पे मैं लाइव कॉल्स लेना शुरू किया था, और जबकि मुझे प्यार ही प्यार मिलता था लोगों से. किसी एक शख्स ने फ़ोन किया शो पे,
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आपकी आवाज़ इतनी भारी और इतनी गंदी है, उसके बावजूद आप टीवी पे काम करती हैं। आपने कभी सोचा है? एंड मुझे याद है मेरी शक्ल जो थी ना, जी क्या सुनेंगे आपसे, यूँ हो गई थी। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर वर वेरी स्वीट, दे लाइक हम एक ब्रेक लेते हैं ना, वो कट के ब्रेक पे चले गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, एक हफ्ता आई वाज लाइक मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ मेरी आवाज़। एंड यू नो वहाँ पे मुझे डीनो वगैरह कह रहे हैं कि तुम्हें इतने अच्छे लोग मिलते हैं, प्यार देते हैं, इतनी कॉल्स आती हैं, सबसे ज़्यादा शो पे लेटर्स आते हैं तुम्हारे लिए, ये वो, और तुम्हें वो एक कॉल जो है, एक ट्रोल, फादर ऑफ ट्रोलिंग, यानी उस वक्त ट्रोलिंग वोग में नहीं थी, वो जो भी थे वो फादर ऑफ ट्रोलिंग हुए, फादर मदर ऑफ ट्रोलिंग, ग्रैंडफादर ऑफ ट्रोलिंग, ग्रैंडफादर ऑफ ट्रोलिंग. and it really did affect me negatively. So there were insecurities I didn't realize, and you know it became a little bad. Then I remember कि जब इंडस म्यूजिक पे मेरा शो तो अच्छा था, लेकिन हम हमेशा बजट पे होते थे. We always had a tight budget हर चीज़ के लिए. So जब ARY म्यूजिक लॉन्च हुआ था तो उनके पास पैसे थे, वो बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, तो उन्होंने एक वीजे को हायर किया था, नताशा नाम था. Yes. उसका बड़ा अच्छा एक सेट था, और ये वो, तो मुझे याद है मैं अपने बॉस के कमरे में जाके ना रोना शुरू हो गई कि वो सेट देखे, और उसको वार्डरोब का भी इतना बड़ा बजट है, उसका शो इतने लोग देखेंगे, यू नो, लाइक दोज इनसिक्योरिटीज, लाइक नॉट अगेंस्ट हर लाइक दैट. जैसे आजकल आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इनसिक्योरिटी नाउ इज, well I guess a lot more. Sidra? आई थिंक वी वर ग्रोइंग अप एट दैट टाइम. उस वक्त हम बहुत सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन ज़रा सी बात आपको सेल्फ अवेयर कर सकती थी. जैसे मेरे साथ भी हुआ. एवरी टाइम आई वाज डूइंग अ लाइव शो, अगर कोई शख्स आके, मुझे याद है एक दफ़ा बिल्कुल शुरू की बात है, हम TV1 पे नया हमने लाइव लॉन्च किया था, तो इट वाज मी एंड असफर, और हम दोनों वर द होस्ट, और हम लिटरली वी डिडंट नो अ लॉट ऑफ पीपल देयर, एंड यू नो वन ऑफ आवर गेस्ट वाज फहद मुस्तफ़ा. And at that time, his name, he used to go by the name Sunny or something, where he wasn't Fahad Mustafa then. And he walked in, और हम ना ये कुछ मैराथन किस्म की ट्रांसमिशन कर रहे थे, जिसमें लोग आ रहे थे जा रहे थे, जो सीनियर्स थे हम उनको जानते थे. अब he was also starting out at that time, हम भी उसको नहीं जानते थे. He got really upset because the moment he sat down, और हम ब्रेक पे थे, और हमने असफर ने डेयर आस्क हिम कि आपका नाम क्या है, एंड फहद हैड अ मेल्टडाउन. ही इज लाइक, जब आपको नाम नहीं पता तो आपने मुझे बुलाया क्यों है, विच ही इज़ राइट, बट वी आर ऑल जस्ट स्टार्टिंग आउट, और चीज़ें इतनी नई थी. मैं तो सबसे कहती हूँ कि वी आर ऑल TV पर्सनैलिटीज़ बाय एक्सीडेंट. वी डिडंट प्लान इट, बस हो रहा था, और हमारे साथ हो रहा था. When we came into it, it wasn't like something that was established enough for us to be like, हाँ मैंने बड़े होके, I mean it was one of those things कि आप बस बन गए. But tell me something, कि now looking back at any of your older work, यानी जो early days में किया था, is there anything which tops your list of, okay, this makes me cringe, I hope this never comes up? Yeah, there's a lot of it, but nothing on MTV. शुरू में when MTV and Indus Vision, Indus Music happened, to success happened, तो एक दो ad campaigns आए. Ad campaigns में there was a commercial for a moisturizer. उसमें I was playing the host only, क्योंकि मैं तो host ही हूँ. तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, एक कंटेस्टेंट आती है, एंड द जजेस आर लाइक, आपकी रंग जो है ना वो थोड़ी सी ढली हुई है, तो आप वापस आए, या आप ऑडिशन में अप्रूव नहीं हुई. एंड आई एम लाइक, ओह सॉरी, यू नो, लाइक गेट आउट. वो वापस जाती है, और फिर कोई उसको ये मॉइस्चराइजर टाइप देता है, एंड इट वाज, वो ग्लो करने लगती है. हाँ, वो ग्लो करने लगती है. और उसमें एक तो वर्ड था कि सफ़ेद, गोरा सफ़ेद, तो नहीं, गोरा लफ्ज़ था, मुझे याद है उस एड में. और आई डोंट इवन रिमेंबर कि प्रोडक्ट था कौन सा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि आई इंसिस्टेड टू माई पेरेंट्स, क्योंकि uस वक्त उन्होंने मुझे कुछ पैसे ऑफर किए थे, वो ब्रांड था कोई बड़ा, एंड आई वाज लाइक, इससे तो मैं थाईलैंड जाऊंगी, और मैं अपना पहला टिकट लेके बैंकॉक जाऊंगी, शॉपिंग भी कर लूँगी, खाना भी खा लूँगी, सब कुछ इसमें निकल आएगा. एंड आई डिड द एड, एंड मेरी किस्मत, दे पेड मी, लेकिन वो ऐड कभी ऑनर नहीं हुआ. सिद्रा, शुक्र करो. लेकिन मेरे दिल में आज तक वो खौफ है कि कभी किसी ब्लैक होल से निकल आया, गंदा बजट, गंदा वार्डरोब, एंड मी गोइंग लाइक, लगता है कि आप गोरी नहीं है. अच्छा, बट व्हाट डू यू फील अबाउट बॉडी शेमिंग नाउ? I mean, वो it is wrong on so many levels. गंदा मेकअप वगैरह तो भूल जाओ. Now it's not in vogue to call somebody कि ओ आपका रंग सफ़ेद नहीं है, तो आप यार आई थिंक कंटेस्ट नहीं कर सकती. और ये वो तो completely wrong. Like, yeah, body shaming on any level is kind of wrong, and I understand that. I even understood that then, but I think I just didn't understand
the extent of damage something like this does, you know, like we had a friend in school जिसको हम मोटा कहते थे, फिर एक था जिसको हम blackie कहते थे, you know, like No, but I go hate back. saying that, but वो खुद भी कहता ही था अपने आप को, यार like it लेकिन became like a चीज़ें भी तो इतनी nickname. जल्दी बदली है ना. बदली हैं. Like back in the 90s, a lot of people cannot perhaps connect the dots, but your older sister Natasha can Yes, cook. That yes. you know we She did a love Gore her Rang Ka recipe. Zamana She video. does Gore Rang Ka Zamana. And I was like, look at you racist, Gore Rang Ka Zamana kabhi hoga na purana. तो People actually वो had a गाना भी reaction. बना था. नहीं, by the way, उस वक्त वक्त भी भी था. reaction था, and that's why the late Junaid Jamshed and Vital Signs had to come up with Samli Saloni. Yes, तो है था ना? तो. था तो. बिल्कुल, बिल्कुल. And I think you know, और होना भी चाहिए था, because that's how you learn. But not in a way perhaps that we do right now. A lot of us just get very, very sensitive and become extremely aggressive. And you know, I've been there. I've not been body shamed, but because of my mental health issues or struggles, you know, a lot of people have underplayed or downplayed it as something that's not that bad. Like you could be pretending, nazar to nahi aata कि अंदर क्या चल रहा है, right? So I mean, you could be saying I am depressed, but you may be lying, or you may be exaggerating, or depression जैसी कोई चीज़ नहीं होती, right? And I did get triggered by it, and it wasn't even body shaming. It was more like, oh, just not validating how I feel, right? It's true. So I completely, but trying to educate people is a better way than abusing them for not understanding. But tell me something. आप जब public figure होते हो, you're public facing. How does that affect your ambitions or your desires, and more importantly, your relationships? Do you think it helped you find love? It broke your heart more times? या तुम कैसे, how do you put it in perspective? एज ओल्ड सवाल हर इंटरव्यू में तो लोग करते हैं, तुमसे भी करते हैं, मुझसे भी करते हैं, शादी कब करनी है, शादी क्यों नहीं की, आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, यू राइटिंग इट ऑफ फॉर फ्यूचर इज वेल. आपको क्यों लगता है कि मैं आगे जाके शादी नहीं तो करूँगी? कहती ना, आप दुआ करें ना, मुझे क्या पता क्यों नहीं हुई. अल्लाह मियाँ से पूछा, अल्लाह मियाँ शादी करवाते हैं, उनसे पूछे. But did it help? Being a star, I'm sure you Helped fall in love. find the right attention, if I may say so. Yeah, everything feels right when it's naya. हाँ. And then you're like, your biggest strength can be thrown at your face. You're too independent, you make too much money, you're on television, it's not a good thing. You speak too much for your own good. You know, what are you wearing? ये कोई time है shoot पे जाने का? Oh, you're going to Islamabad for the weekend. I've heard it all. Right? You've heard it all. You've been on the receiving end of I've it. been on the receiving end of being not appreciated for being who I am. So successful is one thing. How did you deal with that? Because a lot of people, a lot of women struggle with the fact कि अगर उनका जो सबसे, you know, if they like somebody or if they love somebody और इस किस्म की feedback उससे आ रही हो, it's soul crushing. It is crushing. It is very crushing, and it's so sad because then your own success makes you, you know, your own independence makes you insecure in the sense, meaning you are made to feel like all these things are maybe you haven't done the right thing. Even though you're independent, you're financially independent, you've made a name for yourself, people love you, you know, you have stood up on your own 2 feet, and you're still being told things and it's being held against you. Imagine. So it's not a good feeling, and it makes you question yourself, because at some point I did start questioning myself कि हाँ लेकिन सही तो बोल रहे हैं, you know. अभी टीवी पे काम कर रही हूँ तो उनको तो हाँ मैं तो जीन्स तो पहनती हूँ, मैं हर जगह स्लीवलेस ही पहन के पहुँच जाती हूँ, पाकिस्तान में तो हूँ, सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती होगी, you know, not realizing that कि this is some form of, you know, emotional abuse that you shouldn't really put up with, really. Did you ever have to pretend in your life to be somebody you're not? यानी हम जैसे हैं, हम चाहते तो ये आइडियली कि हमें ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी की अप्रूवल के लिए या वैलिडेशन के लिए तुमने अपने आप को बदला, अनुषा? थोड़ा सा तो, you know, अगेन एक बार फिर हमेशा काम करना, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में, या you know, आप करें, आपको जैसे काम करना है आप करें, आपको फिल्म नहीं करना आप मत करें, आपको डांस नहीं करना आप मत करें, आई गेट इट, बट अपने लिए और अपनी समझ से कि मेरे लिए क्या है और क्या नहीं है. बट किसी और के लिए करना इज़ व्हेन यू शुड आस्क योरसेल्फ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, राइट?
किसी और के अप्रूवल के लिए या सोसाइटी की अप्रूवल के लिए. लेकिन ये चीज़ आई थिंक सिर्फ उम्र के साथ आती है, ये कॉन्फिडेंस. और फिर लोग आपको कहते हैं कि ये देखो फिर अब इनकी उम्र हो गई है तो शादी भी नहीं हुई, अब ऐसी बातें करेंगे इसलिए तो शादी नहीं हुई. लेकिन खुश हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है. और वो बहुत कम लोग हैं भाई. When you look around you, there are very few people who are content and genuinely happy in their situation. And I think I've come to that point where I'm very content with my situation. So now whatever anybody says, I mean, I look at them and I'm like, आंटी लेकिन मुझे आपके साथ तो ज़िंदगी नहीं बदलनी. अगर कोई मुझे 2 करोड़ रुपए भी दे दे और बोल दे कि तुम ये आंटी बन जाओ तो तुम्हारे बारे में ये कह रही हैं. My life is better than yours. So how do you Not my life is better than yours, but I'm more sorted where I am in my world too. You're peaceful. You're peaceful and you're open to the blessings and the things that you would like to create. देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग manifestation की या law of attraction की बात करते हैं. It is you have to be your desire, you have to be open to it. And from that place of fear, from that place of lack, you will never be able to create something. You won't be. So, and you don't have to be badtameez and you don't have to fight the system. You don't have to be a rebel without a cause, you know, to get through. I think your communication with, if you have faith, your communication with God, your self-reliance, the ability to feel like I will take care of myself. And then, of course, surrounding yourself with people who actually support you genuinely. So I had to filter a lot of people out of my life. I had to change my circle of friends. I had to change my lifestyle a little bit. And I went a little bit more towards, as cliched as it may sound, because everybody is saying spirituality and meditation these days, but even if it sounds cliched, it is effective. So go for it, you know. It became very self-reliance, and the confidence comes with time though, because the insecurities always stay there. But it will come, it has to come, and when it does, it's so liberating. You know, it reminds me. It reminds me of 3 Idiots. वो नहीं होता जब उस बेचारी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं. वो एक इंटरव्यू में जाता है, वो कहता है यार आपको you need to fix your attitude. कहता है आप अपनी नौकरी रख लें, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, बिकॉज सब कुछ तुड़वा के एटीट्यूड आया है. तो आई थिंक इट्स द सेम विद कॉन्फिडेंस इज वेल. बहुत कुछ आपको झेलना पड़ता है, एंड नॉट इन अ बैड वे. लाइक एवरी टाइम अ वर्किंग वुमन ओपन्स अप अबाउट हर स्ट्रगल्स, तो लोग समझते हैं ओ माय गॉड पता नहीं क्या कुछ देखा होगा, बुली हुए होंगे, हरास हुए होंगे. नो, आई मीन this is life and it happens to each one of us. Everybody. Happens to everybody. And I think it's time that we really considered woman, man to chhod dein. Like a person who's struggling is relevant enough. This is a person and they're having their struggles. And if you regard them that way, then I think it becomes much easier to not label them, but to acknowledge kya ho raha hai and how we can be a better support system to them. अच्छा, कल मैं वैसे ही सोच रही थी कि जितने VJs हैं या मॉडल्स हैं, they realize कि there's a small window, very short window, और उसके बाद they went into doing something else, like उर्वा, मावरा की बात करें, माहिरा की बात करें, they all became actors. Did you ever want to be an actor? कभी भी नहीं. तुमने की तो है एक्टिंग, लेकिन हाँ, लेकिन क्योंकि किसी ने कहा कि एक्ट्रेस भाग गई है, कल जरूरत है तुम आ जाओ. You were a good friend, dependable friend. And एक में तो I literally was like emotionally blackmailed. But I mean, I don't mind. तुम enjoy नहीं करती acting? I don't mind acting, but it wasn't my area of extreme interest कि मैंने यही करना है, जो बहुत लोगों के लिए है, which is fine too. लेकिन मेरा कभी वो passion नहीं था एक्टिंग का, या वो जो भूत होता है सवार के. अभी भी मुझे आते हैं 1-2 ऑफर्स यहाँ वहाँ, और मैं हमेशा कहती हूँ हाँ मैं करूँगी, फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये डेट से वो डेट. मैं तो जापान में होंगी उस वक्त. तो माई ट्रैवल्स आर ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड. अच्छा, वैसे लोग ये भी जानना चाहते हैं, मैं कल किसी से बात की तो उन्होंने कहा यार अनुषे का बाबा कौन है, इसको हर जगह का वीज़ा कैसे मिल जाता है, हु इज़ योर बाबा तावीज़, व्हाट इज़ द मंत्र यू डू, कि तुम्हारा वीज़ा माशाल्लाह एंड एक्सोटिक प्लेसेस लाइक the offbeat places. You go to the popular destinations as well, लेकिन हमारे यहाँ से कोई साउथ अमेरिका नहीं जाता, अफ्रीका नहीं एक्सप्लोर करता, and you want to do that. तो ये आप कैसे और कब प्लान करती हैं? यार अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वही है ना, what you seek is seeking you type. मुझे अफ़गानिस्तान जाना था, मुझे इंडिया जाना था, मुझे साउथ अमेरिका जाना था, तो मैंने पता कराया, 1-2 लोगों से बात की, तो किसी के कोई निकला, किसी ने वीज़ा करा दिया, किसी ने परमिशंस करा दी. And no horror stories ever?
in any of these destinations? कभी कुछ गलत? Amazing stories everywhere. And अफगानिस्तान में सिर्फ मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि लोगों को अगर कोई ज़्यादा अग्रेसिवली पूछे कहाँ से हो तो बताना नहीं पाकिस्तान से हो, क्या ना इंडिया से हो. ना लाइक हैं? I was like, आप हमें पसंद नहीं करते क्या वहाँ पे? well, some locals have issues. They don't like Pakistanis. I mean, some of them. I won't say all. I would like to believe that not. वो जिस तरीके से हम पेंट करते हैं ना एक, oh we hate them, they hate us. And इसके लिए तो I've gotten a lot of negative. I've got flack as well. But you know, I still believe that जिस तरीके से हमने ये hate का narrative push किया है, it's a matter of time. जब आप उसी को बदल के एक दोस्ती का narrative push करेंगे तो लोग अच्छे भी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ. Because they just go where the tide takes them. Where is the tide taking you? The tide? Towards other people from countries. No, generally in life, man. Jaise, you know, mashallah, from where I look at your life, there's a big list of achievements. You've done many firsts things. You've opened up the doors for many other women in Pakistan as well. Lekin ab agar tum sochti ho, yani, Anoushay, can you imagine yourself living anywhere but Pakistan? It's a good question because I've been thinking that of late. Really? Yes. Not thinking as in like can I or can I not, but thinking that I may need to move and what am I going to do? Why do you need to move? तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? कहीं जा तो नहीं रही, फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही. फिलहाल मैं दुबई जा रही हूँ और इसके बाद लंदन. मेरी लिस्ट ले जाना. है ना? लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो यू नो इन द पाइपलाइन रही हैं. फिर कुछ हालात आगे पीछे ऐसे रहे हैं कि बहुत सारे दोस्त मूव कर गए हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी चले गए हैं. तो बहन भी तो बाहर रहती है. बहन भी बाहर है, अब्बू भी अब टर्की में होते हैं, अम्मा अमेरिका में है. वो लोग भी आगे पीछे कम ही होते हैं. तो मुझे भी एक हद तक लग रहा था कि शायद यू नो बहुत सारे लोग दुबई चले गए हैं, बहुत सारे लोग रियाद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कतर एक्सप्लोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इकोनॉमिकली और इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल, लेकिन हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है. I mean, जो कुछ आज दिया है यहाँ पे वो कोई और जगह हमें नहीं देगी. I realize that, I understand that. So, not imagining yourself anywhere but Pakistan? I'm 50-50. Half and half. Half and half. Half and half. You know, everybody has that underbelly, that dark side, that shadow that you know, sort of fall into. उस वक्त दिल चाहता है कि यार I don't want to be public facing. Do you take regular breaks from your social media? या जो real में तुम्हारे साथ हो रहा है, जो भी struggles हैं, do you try to confine it and not put it on social media? कभी करती हो ये? Pick and choose. I do pick and choose. I don't like sharing a lot about my personal life. Okay. On social media. I do now a little bit here and there, but I don't choose to. So I do a lot of my work. और ये दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं. But घर में जो हो रहा है या private life में जो हो रहा है या family के क्या problems हैं, I don't really. And that is why it creates an impression कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा. बिल्कुल. हमारे साथ एक exaggerated happy go lucky scenario है जहाँ आपको rainbows and unicorns नजर आ रहे हैं. अच्छे पिक्चर्स नजर आते हैं क्योंकि फोटोशूट हुए जा रहे हैं. हाँ. लेकिन और आपके पास अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छी डेस्टिनेशंस भी हैं, अच्छा खाना भी है, अच्छे दोस्त भी हैं. सिद्रा दोस्त भी हैं तो बुला लेते हैं तो फिर सेलिब्रिटीज के साथ में हाँ it's true. हाँ. Your life looks like perfect from the outside. But life is all right. If I take you to take a long shot, visualize Anoushay at 80. I would like to have my doodle exhibition. So I doodle and sketch a lot. Yes, so and they're lovely, by the way. Yeah, I know, they're fun. They're nice. I feel conscious saying it, but they are. So I will sort of have a doodle exhibition for sure. And I will... Private jet, private island. Private jet nahi. Island भी नहीं चाहिए. लेकिन हाँ, maybe a house by the beach. Nice. एक टाइम पे एक घर होना चाहिए समंदर के साथ. क्योंकि अगर पहाड़ और समंदर are two of my favorite places in the world. लेकिन दोनों के बीच में अगर पहला घर होगा तो वो समंदर पे होगा. हाँ, सोचो हर साल मेंटेन होगा अगर वो सी व्यू पे होगा तो. नहीं, सी व्यू पे नहीं होगा क्योंकि कोई और ही समंदर पे होगा जहाँ पे मैं जाके स्विम भी कर सकूँ. और समंदर में किमाड़ी पे होगा. नहीं, किमाड़ी पे भी नहीं होगा. अगर होगा पाकिस्तान में, अगर होगा तो बलूचिस्तान में होगा. गवादर. I think गवादर से आगे पीछे कहीं होगा. है ना?
अगर क्योंकि वहाँ का समंदर, वहाँ का पानी, उसमें आप जाके तैर सकते हैं, नहा सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, डाइव कर सकते हैं, और वो मुझे करना है। मैं वो वाला समंदर नहीं हूँ कि ओ यार खिड़की से बहुत अच्छा लगा, मुझे अंदर घुस के ही मज़ा आता है, वरना नहीं मज़ा आता। तो या बलूचिस्तान इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर होते हैं, ठीक होते हैं। ग्वादर का तो मैंने बहुत सोचा था, जब ग्वादर खुला था इनिशियली, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा था कि हमने एक अच्छा सी साइड प्रॉपर्टी बस वहाँ ख़रीदनी है और अपना एक प्राइवेट बीच बनाना है, मैं वहीं पे रहूँगी। अच्छा, ये जो सारी आप विजडम देख रहे हैं, ये जो मैच्योरिटी देख रहे हैं, जैसे कि अनूशा ने कहा कि ये वक्त के साथ आती है, लेकिन आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द टाइम एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू मेड टाइम फॉर अस टुडे एज वेल। मुझे अनूशा आखिरी सवाल ये करना है तुमसे कि मुझे आपसे सवाल करना है। प्लीज़ करें प्लीज़ करें, पहले आप Where do you see yourself when you would be 80? यार, आई वांट टू सी माई सेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी। मेरा जो ना, इफ़ आई लुक एट माई फैमिली एंड स्पेशली इफ़ आई लुक एट माई मम, मुझे लगता है ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती हेल्थ वाइज। तो मैं, जैसे अभी तुम बात कर रही थी जापान की या फार ईस्ट की, वहाँ पे हम टूरिज़म पे कहीं पे भी निकलते हैं, आप देखते हैं यार एक ग्रुप आया हुआ होगा चाइना से या जापान से, 80 ईयर ओल्ड्स का, दे टेकिंग फ़ोटोज़, दे राइडिंग अ बाइक, और हम 40-45 के बाद ना हमसे रिक्शे में नहीं चला जा रहा होता, हम बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। हाँ जी, तो वो आई वॉन्ट टू एक्चुअली इन्वेस्ट एंड बी मोबाइल, ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। बाकी मैंने इतना नहीं सोचा बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, AI इज़ देयर एंड आई मीन इसके बियॉन्ड नहीं सोचा, बस आई वांट टू बी हेल्दी, हैप्पी, मोबाइल, होपफुली नॉट इन डेट, सो थिंग्स लाइक दैट। हाँ, सही है। लेकिन अगर फिर थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, आखिरी सवाल जो मुझे आपसे करना था कि व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू योर 25 ईयर ओल्ड सेल्फ, क्योंकि उस वक्त हम काफ़ी मैन चाइल्ड सिंड्रोम में होते हैं ना, हम पूरे ना एडल्ट होते हैं ना हम बच्चे होते हैं, तो और चीज़ें खौफनाक भी बहुत लगती हैं। सो व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू योर 25 ईयर ओल्ड सेल्फ? I think my advice would be to not take your life so seriously. Don't take your life so seriously. Really. I think we really beat ourselves up when we're younger to prove things to ourselves, to others around us. But again, it's the kind of wisdom that's going to come after 25. थोड़ी सी मिस्टेक्स कहने में करनी आसान पड़ेंगी। है। हाँ, और take each and every experience of your life in your stride. हाँ, चलो ये not taking yourself so seriously कुछ थोड़ा सा वो कर देते हैं कि take your life seriously, you can't help it, I guess. But do understand that in the bigger scheme of things, what you're experiencing today will not be as relevant to you tomorrow. So don't, अच्छा, वैसे मैं तो that's अपने true. रेडियो शो में भी बच्चों को ये कह दिया था उसने गलती से, किसी ने कहा ओ आई डिड रियली बैडली इन वन एग्जाम, आई सेड कोई बात नहीं, there'll be another exam. So I was like, am I sounding like somebody who's encouraging them to just fail and not take the education seriously? And I don't want the parents to think कि अनुषा कह रही है कि कोई बात नहीं, तो फेल हो गए तो क्या हुआ, बहुत लोग फेल होते हैं। वैसे होते तो हैं। आपस की बात है, जो लोग ये कह रहे होते हैं ना अपने बच्चों को कोई फेल ना होना, कभी अपनी उनकी कोई रिपोर्ट कार्ड देख ले तो बच्चे कहेंगे हेलो, आप जो इतना इतरार है। ऐसी होती थी कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था तो वो कहती थी मत करो। अब्बू कहते थे नहीं वर्क हार्डर, तुमने ट्यूशन पे गई ये वो, तो मामा से अच्छा तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद, मत करो। कैसे नहीं करूँगी, मतलब कि मैथ्स नहीं करूँगी, मैथ में फेल हो जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। और मैं मदर से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं फादर वाज नहीं करो करो करो, वो ट्यूशन पे छोड़ रहे उठा रहे और एक बच्चा पागल हो रहा है क्योंकि मैथ का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हेल्दी प्रेशर अच्छा होता है, यानी आपको एक तरह से क्या कहना चाहिए कि इट शुडंट डिबिलिटेट यू कि आप कुछ कर ही ना सके ज़िंदगी में, लेकिन इट शुड बी इनकरेजिंग एंड हेल्दी इनफ कि आपको लगे कि यार इसका प्रेशर नहीं लेना एंड जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा हो गया सिद्रा, अब तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ माय रेडियो शो, तो रोज़ सुबह मुझे बोल रहे थे टुडे इज़ स्माइल एट योर फ्रेंड डे, टुडे इज़ लाइक ड्रेस योर फेवरेट बुक कैरेक्टर डे, टुडे इज़ लाइक एंड दैट्स अ गुड थिंग, अ डिबेट, टुडे इज़ लाइक डांस कॉम्पिटिशन, टुडे इज़ लाइक अ स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट। हमारे स्कूल में तो सिर्फ यही था कि पढ़ो और एग्जाम दो, और अब एग्जाम नहीं है तो टेस्ट है, अब टेस्ट नहीं है तो मॉक है, अब मॉक नहीं है तो फिर असेसमेंट है। लेकिन आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट स्माइल एट योर फ्रेंड डे। आई डोंट नीड अ डे टू स्माइल एट Anoushay. That was an exaggeration, but you know what I mean. Thank you so much for being here and for being so candid and being so wonderful and being yourself. I mean, I think we need more Anoushays in our life. And thank you. Thank you for being there. Thank you for having me. It was a lot of fun and all the very best with this. Thank you so much, Anoushay, for making time, for your wit, for
your candor, for being so open. I always tell people we need more Anoushays. Be an Anoushay in a world full of non-Anoushays. And of course, this is, in the series of very candid conversations. So please, isko like, subscribe, share, comment, zarur kijega, because apparently that's great for the podcast. So until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.